Bombay, what's always struck me is how you see these landscapes of blue tarpaulin as you land in. Tarpaulin is something it's cheap, it's commonly available, and it's often used in Bombay as a way of demarcating spaces. You see it being used as roofs, sometimes protective from rain, protective from also sun. Other times simply as a way of creating a temporary sense of separation. Dharavi is Asia's largest slum, and tarpaulin is something that again is used all the time. With Fearless in Dharavi, we're really looking at using tarpaulin as a metaphor for boundaries and how we create boundaries. So of course physically we have these blue sheets separating us, but how can we create boundaries in a space where there is no space? There's no physical space. Often 8 people share an 8x8 plot with a kitchen and a bathroom inside of there. So that's what Fearless Dharavi has been about. Miko city boy, city boy, city boy, boy. Miko city boy, city boy, city boy, boy. Miko city boy, city boy, city boy, boy. City boy, boy, city boy, boy. Miko city boy, city boy, city boy, boy. Miko city boy, city boy, city boy, boy. Miko city boy, city boy, city boy, boy. City boy, boy, city boy. Over the 3 days of working, we've had a very intense kind of workshop process as well. To begin with, we sat down and with a group of around 10 women across, some were young, some were 11 or 12 in the 8th grade, others were old and wise. And so with this mixed group, we started to understand what their spaces looked like. To begin with, we asked them to describe the space that they lived in. And like I said, often it was an 8x8 plot with 8 people in there or 12 people in there. Beds were shared. So after understanding the kind of spaces that they resided in, we started to ask them about whether that made them uncomfortable or whether they actually quite enjoyed it. To my surprise, actually, they said that they really enjoyed living with all of these people. When they were alone, they would find themselves scared, because it's a community, it's your family. It's actually, in a place like this in particular, it's what makes you the happiest. Of course, there's awkwardness. Of course, there's tension. Of course, there's fighting over space, like who sleeps on which side of the bed and all of that stuff. But at the same time, there's an overwhelming sense of community, which is really, really essential to this place. And the second thing that we did was we started to do an exercise where we used duct tape, blue duct tape, again representing blue tarpaulin, to define our own boundary. So of course we know the boundaries of our home, but what do emotional boundaries look like? What do sexual boundaries look like? Those are the kind of questions that we were asking people. So with each woman who sat down, we did this ritual of actually drawing your own box around yourself or defining your borders using this blue tape. मेरे लिए जैसा एक जगह है जिसमें मैं अपना बैठ के पढ़ सकूं, मुझे कुछ सोचने लगा सोच सकूं, मुझे भी कुछ करना हो, ड्राइंग, पेंटिंग या बुक पढ़ना हो, तो मेरा सारा ऐसा सामान आगे रहता है, मैं पीछे रहती हूँ वैसे। और तब भी कोई आना नहीं मांगता है वहाँ पे। ऐसे जब भी मैं आती तो मैं बहुत चिल्लाती हूँ, कोई मेरे बुक्स को हाथ लगाए, मेरी चीज़ों को हाथ लगाए, ऐसा। आती तो मेरे को कंफर्टेबल, हाँ। And it was really kind of amazing to also see how a lot of times it was entirely metaphorical. Like it wasn't at all about physical space. जगह तो छोटी है, बट मेरी थिंकिंग जो है बहुत बड़ी है। इस बाउंड्री में अभी फिलहाल हम लोग हैं, वो सच में मेरे लिए सेफ्टी है। अब ऐसा सोचते हैं कि कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमको हमारा एक कमरा अलग होए, लेकिन वो मेरे नसीब में कहा, हाय नसीब, मेरा नसीब टूटा। बस इतना ही हमें करना है, इसके आगे और कुछ नहीं। बच्चे लोग को ट्यूशन देते थे, हम सिलाई करते थे, ये सब मेहनत करके आज हमने अपने बच्चों के लिए ये बाउंड्री बना के रखा है। Having understood all of these boundaries, we then collectively came up with the affirmation, bonded not bound, or bandh nahi bandhan. बताया गया था कि बाउंड्रीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा भी कि आपकी रूम हो या फिर जो भी अपनी तरफ फिजिकल बाउंड्रीज एंड मेंटल लेवल आपकी सोच की बाउंड्रीज, तो हमारे ऊपर है कि हमें कैसा रखना है, बाउंड्रीज में रहना है या बाउंड्रीज के बाहर, बाउंड्रीज भी नहीं चाहिए ऐसा।
तो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, थीम, तो हम बनाएंगे उसके ऊपर, अपनी भी सोच डालेंगे। और मेन थिंग इज़ फियरलेस। मतलब उसको है ना अज्ञान कैद कर रहा है, मीन्स अगर वो पढ़ेगी नहीं लिखेगी नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी, वो घर की एक कोठरी में ही इसके कैद हाथ रहेगी, भी तो मतलब सब वही घर में भी काम करेगी, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा अगर उसके पास पढ़ाई नहीं है तो। गरीबी उसको, अगर उसके पास पैसा रहता तो वो पढ़ सकती थी, गरीबी उसके पास पैसा नहीं तो वो नहीं पढ़ पा रही। आजकल का क्या है, पैसा जो पढ़े लिखे उसको ही नौकरी है। बंधन प्यार जो है तो माँ से भी होता है। एक जबरदस्ती वाला बंधन है, इधर नहीं जाने का, उधर नहीं जाने का, फालतू काम नहीं, चलो इधर रहो, मतलब एक जबरदस्ती उसके ऊपर, जबरदस्ती करना उसके ऊपर, ये एक बंधन है। और एक बंधन होता है प्यार का, खुले आकाश में घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं, उसके ऊपर शक नहीं करना, वो बंधन है। ये तो बंधन ही बंधन भी बहुत किस्म के होते हैं। जैसे बंधन में रहना है या नहीं, तो जैसे बता रहे हैं कि छोटी बांधियाँ भी बताया गया है हमें कि छोटी बांध रही है एक दूसरे को, तो बंधन भी कौन से हो, जैसे हमें जो चाहिए वो, और जो नहीं चाहिए तो वो तो हम खोल भी देंगे, हम हमारी डिसाइड कर लेंगे हमें जो चाहिए नहीं चाहिए, दूसरा हमें नहीं बताया कि हमें क्या किस बंधन में रहना चाहिए ऐसा। Essentially what we're trying to say is that this community, the sense of togetherness is beautiful. We love it. It's a sisterhood. There's a community of women that support each other and care about each other and stand up for each other. But at the same time, we can't be bound by it. We shouldn't be bound by this sense of community. It can't be something that actually ties us down. And so it's about really keeping that bond, but slowly unraveling those bounds around ourselves. चेहरे पे रौनक आ गई है और जिंदगी नई शुरुआत हो गई है। जीवन हमारा पुराने जमाने जैसे दिख रहा है, अच्छा हो गया। अब थोड़ा मॉडर्न आप लोग कलर में आ गए, कलरफुल।